अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा मसरूर और मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे एक पाकिस्तानी एक्टर अहमद ताहा गनी। और ये टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत सारे कैरेक्टर्स में परफॉर्म कर चुके हैं। इनका एक रीसेंट ड्रामा परीजाद जिनमें इनका कैरेक्टर था माजिद, और अभी ये ishqelaa में जैन का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू आपका। सबसे पहले कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप पैदा कहाँ पर हुए? सो मेरी पैदाइश जो है वो कोयटा की है। आई वाज बोर्न इन आई थिंक आई वाज बोर्न ऑन 28 जुलाई 1990। कोयटा सिटी was where my father was posted. Yeah. ओके, तो आपकी एजुकेशन मतलब शुरू पे फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहाँ से? Right. So because मेरे father army में थे, so we kept on moving from city to city. So मेरी schooling more or less army publics में हुई है। उसके अलावा I've attended I think a couple of years in Behriya College in Islamabad, and then I've studied a couple of years in 4G Foundation for Boys, and then I went to Australia to complete my undergrad. So yeah, that's my educational history. And if you want to know what I've done my bachelor's in finance, yeah, from Deakin University. ओके, तो बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था या फिर ये बड़े होके कहीं रियलाइज़ हुआ कि कहीं चले जाते हैं? No, one thing for sure, for certain, that I knew ever since I was a little kid is that I always wanted to act. बाकी और चीज़ों के बारे में मुझे इतना पता नहीं था इतनी क्लैरिटी से कि ओके व्हाट आई वांट टू डू, बट दिस वाज समथिंग दैट आई न्यू फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ओके, दिस इज दैट समथिंग दैट if God willingly, if God has it in my plan, so yeah, I'll definitely pursue it. क्यों बचपन में कभी शीशे के सामने खड़े होके ऐसे, या कोई स्कूल में कोई प्लेज़ वगैरह किए थे कि लगता था कि कुछ और नहीं तो एक्टर तो बन ही जाएंगे? मोर और लेस कभी मैंने ऐसा किया नहीं, बट स्कूल्स में थ्रू आउट एंड स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में आई ऑलवेज ऑप्टेड फॉर थिएटर। सो आई हैव डन लॉट ऑफ थिएटर व्हेन आई वाज अ लिटिल किड इवन, और फिर कॉलेजेस में भी करता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू इट इन कॉलेज, बट मोर और लेस येस आई प्रैक्टिस इट। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि शीशे के सामने मुझे खड़े होके जो है वो कभी इस तरह का कुछ हो। सो नथिंग लाइक दैट। तो मुझे ये बताएं कि मीडिया में एंट्री कैसे हुए थे आप? Okay, so as I was telling you a little earlier, my first exposure to mainstream television was in Karachi. I think in 2003, I came as a child actor, or it was just a one episoder of a play that aired on Sindhi television. I think it was KTN, and yeah, that was my first exposure to mainstream television. Otherwise उससे पहले मैंने स्कूल में ही थिएटर वगैरह किया था। So that was my first exposure to it. और उसके बाद when I came back after my degree, I was casted for one of the dramas I think that aired on PTV World and Urdu one. It's called Jaan Hatheli पे. So that was in 2012. Yeah. जैसे आपने मुझे पहले बताया कि यलघार मतलब फ़र्स्ट आपने एक फ़िल्म ही की थी, Yeah. तो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? I think by far the work that I've done so far, I have enjoyed acting in Yalghar the most. Uska, because we were shooting in different locations, it was closer to my home base considering I come from an army family. It was a very easy character for me to play, and to be around military grade weapons, and to be around cobras and tanks and all that. So it was a lot of fun. Yeah. ओके, तो अभी आप जो कैरेक्टर्स वगैरह परफॉर्म करें, एक किस्म के आप माशाल्लाह से हिट हो चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपका सफ़र, एक जर्नी है, कैसी थी? मुश्किल थी, आसान थी, या एवरेज, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा मेरे पे करम है कि आई डिडंट रियली हैव टू स्ट्रगल एज हार्ड एज आई हैव सीन पीपल स्ट्रगल, and I actually acknowledge the fact that they've struggled a lot to be where they are. I don't know why, but Allah का शुक्र है कि इस तरह की struggle नहीं थी. But yes, I have auditioned for all the roles that I've done. That's my key focus. That's always my key goal कि
before taking on a project, even though if the director has seen my work or not, I would still opt to, give an audition, because I would want to do justice to the character. Because unless and until if you're not sincere with your character, and you know it in your heart that okay, no, I'm not built for this character, so you're just doing yourself this service. So I think it's better to actually audition for every role, no matter where you are in your career. It's always very of paramount importance that you actually know that okay, yes, I have cleared the audition. I'm here on merit. There is no two ways about it. So it generally makes you feel more confident about yourself. So I think बेहतर यही होता है आपके लिए कि if you audition for it, then the rest Allah Ta'ala आपके लिए हैं. He just like have unwavering faith in him that he has a plan for you. And अगर आपको लग नहीं रहा कि वो प्लान उस तरह हो रहा है, बट Allah Ta'ala works in mysterious ways. It's for our own benefit that he does, and eventually you end up being there where you want to go. तो अभी तक की जो जर्नी है उसमें कभी कोई ऐसा मोमेंट आया हो जहाँ लगा हो कि बहुत डाउन हो गए हों, बहुत डिफ़िकल्ट लगा हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? सही तो मेरे साथ हुआ है अक्सर औकात ऐसे कि आई waited on the set for about 10 hours and just for one scene, or that scene doesn't even have dialogues in it. So but because I'm very passionate about my work, and you can't be an actor unless and until you know कि आप set पे जा रहे हैं और set पे time लगेगा. Yeah, so you have to be a very effective team player and or enable your team rather than throwing tantrums right and left and saying stop wasting my time. Rather than that, you be a part of the team and you be a part of the process, and you say okay, I'm here to wait as long as it takes. I'm going to give it my best shot, no matter how small or insignificant the role is, or how small or insignificant the scene is. It still will add value to your entire project. So I think उसकी वजह से और एक पॉजिटिव माइंडसेट होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर फेस्ड इरिटेशन लाइक दैट. और अगर कोई इस तरह की चीज़ होती भी है तो माय अल्टीमेट वेपन इज़ दरूद शरीफ. आई यूज़ इट एंड ऑल ऑफ माय वरीज गोज अवे. या दैट्स गुड. तो मुझे ये बताएं, अगर हम थोड़ी लाइटर मोड में बात करें, आपकी फैमिली में कौन कौन है? So, my immediate family. So I'm married, alhamdulillah. I have a wife. I have parents, mom and dad, and I have two other siblings. Both of them are older to me. I have an elder sister and I have an elder brother. I have a bhabi, and I have two most adorable nieces and nephews. So, alhamdulillah, yeah. Abhi tak to Allah Ta'ala has been, again, like I've said before, very kind. ओके. आपकी जो पूरी जर्नी है उसमें आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा है आपके लिए? वो इधर कोई फैमिली में से है, कोई फ्रेंड्स में से, कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहा है आपके लिए? मैं ये दोबारा कहूँगा कि और बार बार कहता रहूँगा कि जितना ज़्यादा मैं अल्लाह ताला के सामने सजदे करूँ, उनका शुक्र अदा करूँ, कम होगा. And it's just not just a statement. I really mean it from the bottom of my heart. My entire family, all of my friends, they're incredibly supportive. I think मेरे सबसे ज़्यादा supportive obviously is my mother. She's like 10 times or 100 times at least more concerned about my career than I am. And she's always worried, she's always focused, and she watches each and every scene of mine like with with a hawk eye, and trying to figure out अच्छा ये अच्छा था, ये बुरा था. And similarly goes for my father. He's very critical. He knows if I'm slipping, it's like, no, you need to step up your game, and this is, I think यहाँ पे थोड़ा सा dialogue off था, यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. I think same goes for my sister, my brother, especially my wife. So yeah, again, Allah का ऐसा करम है मेरे पे कि everybody around me, even my niece, is so supportive when it comes to my career, that she's excited. She's more excited than I am when anytime my new project is coming around. So Allah का शुक्र है बहुत ज़्यादा. I have a very supportive support system. ओके. अब मुझे ये बताएं कि अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर है कि आपको लगता है कि ये मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा किया और आपको वो सबसे ज़्यादा पसंद भी था? So hands down it would be Captain Asif from Yalghar.
I think that was my favorite character. It was really because मेरे जो मुझे जो उसकी brief दी गई थी character की थी, is like this guy is you, so yeah, you're playing yourself, so you don't have to change anything about it. जो भी इसकी idiosyncrasies हैं, these I want the character because the writer wrote the character around me because he knew me. So it's like so आपकी वो सारी चीज़ें इसमें मैं रखनी. So that's why it was very easy. It was like as if I was just playing myself. So that was really close to my heart. That person is actually me. ओके। और अभी तक कौन सी आपकी को स्टार फेवरेट रही है जिनके साथ आपने काम किया है? So I've had the opportunity, alhamdulillah, to work with very good artists. I think by hands down, by acting skill wise, I think Yumna Zaidi is the best. She's just an incredible actor, and I think yeah, more or less, सारे बहुत अच्छे. जैसे I had the opportunity to work with Mol Baloch. She was very good. Komal Mir was very good. Areej is a very dear friend of mine. She's incredible. She's full of life. Um, yeah, so overall सबके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. ओके, तो मुझे ये बताएं कि अभी तक लाइक आपने जितना काम वगैरह किया है और आपको कहीं लगा हो कोई ऐसा मोमेंट आपके लिए जो बहुत सरप्राइजिंग हो, लाइक आपके करियर में भी जो आपको एकदम से किसी कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत प्यार ऑडियंस की तरफ से मिला हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग था? I think that was Parizad. Hands down, it was Parizad. I didn't expect कि माजिद को उस तरह की recognition भी मिलेगी, considering कि इस तरह project progress करता है. And then like how everybody related to that character, and no matter where I went, I still am called by my character name. So I think that would be the one. ओके, पहला फ़ैन मोमेंट कौन सा था आपका? पहला fan moment. So well, there have been multiple fan moments. I think every time I go to a mall, there are a couple of fan moments. I think I don't really remember it, but the best one I'd say I was in Lahore and I was getting my car fueled up. So the person who was filling my car, he knew that I was an actor, and he was very happy to see me, and he got very excited, and the real reason why I want like I became an actor is just to feed off of that appreciation that people give you. It's just so heartwarming to see that somebody walks up to you and they have a big smile on their face, and they recognize you for your work, and they just want to take a picture, and they want to have a conversation with you. I mean, for me that is my true earning, and for me I think that is Allah Mia's best blessing to me, that I can bring a happiness, a portion of happiness, where I can just brighten a portion of somebody's day. So I think that is what makes me really happy about what I do. तो अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? लाइक आपको लगता है कि जब आप या आपका जो कोई गोल था वो अचीव हो गया है, जो बनना चाहते थे आप, क्या वो बन गए या अभी कुछ है करने के लिए? आई थिंक अभी तो वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की इब्तिदा भी नहीं हुई. सो वो अभी तो like I've just recently fell in love with my career, and I'm just scratching the surface. I haven't even started. वो कहते हैं बॉलर जो है जब अपना रन अप स्टार्ट करता है तो he's just looking at his feet. So I'm just right now in this point in my career, I think I'm just looking at my feet. Or planning wise, I don't think I really have a plan. I don't have a very grand plan. You know, my plan is that if it's someday, if Allah Ta'ala wishes it to be or wills it to be, that I should be able to brighten up anybody's day just by sitting with them and talking to them. ओके, तो आप एक्टर के साथ साथ म्यूजिशियन भी हैं, जी बिल्कुल. तो ये ज़रा कहानी हमसे ज़रा शेयर कीजिएगा. So music is something that I picked up on when I was a teenager. I got really interested in rap. So my mamu, my uncle, he had an entire collection of very old school hip hop artists, and I used to just steal a couple of cassettes from them, and try to listen to. That's how I got interested, and then I think at the age of 18 I started. Actually, at the age of 14, I had my first vocal lessons, and then I pursued my vocal lessons again at the age of 23 again. So
और साथ साथ म्यूज़िक तो मैं करता रहा हूँ. आई यूज़ टू प्ले द गिटार, आई यूज़ टू यू नो कंपोज म्यूज़िक एंड स्टफ. सो वो मैं करता रहा था साथ साथ. आई एम नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन दैट, बट I worked on my voice a lot, so that's how I actually got interested in it. Now I love it, but I don't really have enough time to give as much time as I wanted to. Yeah. तो अभी हम फ्यूचर में आपको कौन कौन से और किस तरह के प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं? So, as I had mentioned to you prior to the interview, I can't really, because I've signed NDAs, so I can't really talk about the names and the story about the projects, but I think there are about 4 of them that are going to be coming soon. जिसका आई थिंक दो का स्टार्ट जो है, शूट का स्टार्ट हो रहा है अगले मंथ से, और सब्सिक्वेंटली 2 और का उसके बाद होगा. सो ये है, बता देता हूँ, हम के हैं प्लेस, और एक और चैनल है विच इज़ गोइंग टू बी रिलीज सून, इज़ गोइंग टू बी कमिंग आउट सून, द चैनल इटसेल्फ. So can't really say too much about that as well, but yeah. इट्स ओके. और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या नए जो अभी आ रहे हैं मीडिया में एक्टर्स, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? So मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि always think about yourself, how you would want to, I mean, वो कहते हैं ना कि be the change that you would want, around you, how you want the world to change. So be that change first. So I'd say that, like, if you want to be an actor, take your profession seriously, work on yourself seriously, go to the gym, take care of your diet, and, work on your skill, try to learn how to do something better and better, be it being a musician or be it at any kind of artist. So you have to, constantly work on your skill, and अपनी एक्सपेक्टेशंस अलाइन करें. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी सर्कमस्टांसेस के साथ अलाइन नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से हम डिसहार्ट हो जाते हैं. सो you have to be very pragmatic, you have to be very resilient in say, and you have to persevere and think, okay, no, things will get better, and eventually they do. So यही होगा कि या कोई भी काम आपको उतना ही रिटर्न देता है जितनी आप एफर्ट और मेहनत पुट करते हो. और तो द मोर एफर्ट दैट यू ट्राई टू पुट इन समथिंग, द मोर रिटर्न यू विल गेट, और अल्लाह ताला भी आपको ब्लेस करेंगे इसी तरह से. और दूसरी बात यह है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग योर वे, तो मान लें कि ये रब की मर्ज़ी है, एंड ट्राई टू फिगर आउट अनदर वे. थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Aisha, for you for taking out the time and coming to see me. Thank you. थैंक यू.